Good evening, students. Today we will start the first lecture of Mechanics of Materials. The subject code of this subject is WME 502. Okay. In this lecture, we will discuss about what is mechanics of materials and what will be the syllabus of this subject. Now, in this subject, in first unit, we will discuss about what is stress and simple strain. After that, we will discuss what is shear stress and shear strain. We will discuss about Hooke's law and elastic constants, about the elastic constants, what is elastic constants, and after that we will discuss about the generalized Hooke's law. Hooke's law is applicable for the one-dimensional stresses and generalized Hooke's law is applicable for the three-dimensional stresses. After that we will discuss about lateral strain and lateral deformations and Poisson's ratio. After that we will discuss about how to calculate the stresses in a straight, stepped and tapered sections and in composite sections. Okay, and the last topic of this unit is stress due to the temperature changes. If the temperature is changed in a component, then what will be the stress induced in that component? Okay, in first unit we will discuss these topics. Okay, in unit 2 we will discuss how to calculate what is shear force and bending moments and how to calculate shear force and bending moment in a beam. Okay, so in this unit we will discuss only about the shear force and bending moment. In unit 3, stresses in beams, in this unit we will discuss about the stresses induced in a beam due to the load conditions, different type of load conditions like point load, uniformly distributed load and other type of loads. Particularly in this unit, we will calculate the stresses induced in a beam of rectangular cross sections, circular cross sections, I sections and T sections. Okay, and in last we will discuss about deflection of beams. Okay, now come to the unit number 4. In this unit we will discuss about torsion. Torsion, what is torsion? If a torque is applied on a circular shaft, in that case, how much amount of shear stress is acting induced in a circular shaft, we will calculate in this unit. So, in this unit, we will discuss circular solid hollow shaft, torsional moment of resistance, power transmission of straight and step shafts, twist in the shaft sections. Okay, and in this unit, there is another part of thin sections, thin tubular sections, thin wall sections and columns. Okay, column is another topic. So in this unit column we will discuss the load, the crippling load or buckling load developed in a column, or a buckling can produce, how a buckling will produce in a column. Okay, the buckling and stability, critical loads, column with pinned ends, column with other support conditions, effective length of column,
एंड सेंट फार्मूला फॉर कॉलम्स। तो कॉलम में स्ट्रेसेस किस तरह से इंड्यूस्ड होते हैं और कितने लोड पर, जिसे हम बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड कहते हैं, उस किस अमाउंट के लोड पर एक कॉलम में फेलियर यानी कि बकलिंग स्टार्ट होती है, हम इस यूनिट के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अब लास्ट यूनिट 5 में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द कास्टिग्लियानोस थ्योरम, और डिस्कस करेंगे कि लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं स्ट्रेन एनर्जी में, और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस में, शियर स्ट्रेसेस में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बैंडिंग एंड टॉर्जन, एंड in this unit the last topic is theory of failure. Okay, theory of failure, maximum principal stress theory, maximum shear stress theory के लिए हम डिस्कशन इस यूनिट में लास्ट यूनिट में करेंगे। तो ये टोटल पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू है जो हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड जनरलाइज्ड हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by the body to the external load applied to it per unit cross sectional area. Okay, stress is the internal resisting force per unit area developed by the external force. Let consider a body in engineering mechanics. We already discussed that what is tensile force, what is compressive force, and what is shear force. um, I again as we know that what is tensile force, when the line of action of a force is perpendicular to any plane and the direction of the force is away from the body, this type of force is known as tensile force. Okay, if the line of action of the force is perpendicular to the any plane and the direction of the force is towards the body, this type of force is known as compressive force. And shear force is known as when the line of action of a force is parallel to any plane of the body, then this type of force is known as shear force. Okay, now consider a tensile force is acting on a body and the cross sectional area of the plane is A. In that case, internal resisting force per unit area to oppose this external force is known as stress. Stress is generally denoted by the sigma, and according to the definition, stress is force per unit area. So we can calculate the magnitude of the stress by this formula, force upon area. In SI, unit of the force is Newton and unit of the area is meter square. Then the unit of the stress is Newton per meter square. Okay. Now, by a chart, force
stress, strain, when a tensile force is applied on a body, then due to this tensile force, a tensile stress is induced in the body. The magnitude of this tensile stress will be force upon area, tensile force upon area. Due to the compressive force, a compressive stress induced in the body, and the magnitude of this compressive force is force upon area, compressive force upon area. Now, a shear force develops a shear stress. Generally, we denoted this by the tau, and the magnitude of this shear stress is force upon area, as the definition of the stress. So, tensile force develops a tensile stress in a body, compressive force develops a compressive stress in a body, and shear force develops a shear stress in a body. Okay. What is strain? Strain is deformation per unit length is known as strain. Let's suppose we have a rod of length L. We have a rod of length L, and a tensile force is applied on this rod parallel to the length. Due to this tensile force, length of the shaft is increased by delta L. Okay. So, strain is defined as deformation or change in length per unit dimension is known as strain. So, according to the definition of the strain, here strain is known as change in length upon initial length. Strain is change in length upon initial length. When a tensile force is applied on a body, in that case, generally the dimensions of the body will increase. So, the strain is, the definition of strain is final length minus initial upon initial length. Whenever a tensile force is applied on a body, then in that case the final length will be will greater than the initial length of the body. Okay, so the change in length will be positive. So generally we will take tensile strain as positive strain. Okay. Whenever a compressive force is applied on a body, in that case the final length of the body will decrease uh, from the initial length. So, the difference between the final length and initial length will be negative. Okay. So, we will take this strain as negative strain, delta L upon L. But for the we will calculate the strain by the formula change in length upon initial length. Okay. And shear strain is denoted by the phi, and the formula for this is
change in length upon initial length, but the deformation in the case of a shear force will be parallel to the direction of the line of action of the force. Here the deformation in the case of tensile and compressive force is parallel to the line of action of the force. Similarly, in the case of a shear force, the deformation will be parallel to the line of action of the force. Here the shear force is F. Suppose the body is rigidly connected with the surface and the length of the side wall is L. Due to the shear force F, body will deform like this, shifted toward the right side of the, yeah, in the direction of the force. Body will shifted towards the, in the direction of the force. Suppose this point shifted to the another point A dash, and the distance between this A and A dash is delta L. In that case, shear strain will be phi will be delta L upon L. Okay, so the deformation is parallel to the line of action of the force and in the direction of the force. So a tensile force produces a tensile stress, and due to the tensile stress there will be a tensile strain. The compressive force develops a compressive stress, and the compressive stress produces a compressive strain. And shear force develops a shear stress, and shear stress produces a shear strain. Okay. Now come to the Hooke's law. What is Hooke's law? Hooke's law says that within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. According to the Hooke's law, within the elastic limit, stress is proportional to the strain. By if we plot a graph between stress and strain, then according to the Hooke's law, up to a point which is known as elastic point, elastic limit, stress is directly proportional to the strain, then the graph between the stress and strain will be a straight line. Okay. If we remove this proportionality, then a constant will introduce. This constant is known as elastic constant. Okay, elastic constant. Now in the case of tensile and compressive strain, in the case of tensile and compressive strain, there is a elastic constant which is known as Young's modulus. This constant is known as Young's modulus. Here for tensile case, this is the Young's modulus for tensile, and for compressive force, this elastic constant is compressive Young's modulus for compressive force. Okay, compression, Young's modulus for compression, elastic constants. Modulus of elasticity, this is also known as modulus of elasticity.
Generally, whenever we discuss about elastic constant for tensile and compressive cases, we assume that these both the constants are equal. Okay, both the constants are equal for the same material. Okay, this is the Young's modulus or modulus of elasticity. In the case of shear stress, there is a elastic constant which is known as modulus of rigidity. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए टेंसाइल और कंप्रेसिव केसेस में जो डिफॉर्मेशंस होते हैं वो लीनियर माने जाते हैं। लीनियर डिफॉर्मेशंस के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जब हम शेयर फोर्स की बात करते हैं और शेयर स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो ये एरिया इसमें इंट्रोड्यूस होता है एरियाज के लिए। जहां एरिया की हम बात करते हैं वहां पर जो इलास्टिक कांस्टेंट डेवलप होता है उसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। जी, लास्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, in that case elastic constant we will use K. This K elastic constant is known as bulk modulus. ओके, बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर आप देखिए टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन और उससे भी इलास्टिक जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस है। शेयर फोर्स के केस में शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन एंड जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट होता है। वॉल्यूमेट्रिक केस में अगर हम बात करें किसी कंटेनर में, सपोज कोई कंटेनर है हमारे पास, उसमें फ्लूइड फिल है और उसमें कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी के हर एक डायरेक्शन से फ्लूइड प्रेशर अप्लाई होगा, तो उस फ्लूइड प्रेशर को पर यूनिट एरिया जो है हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से भी डिनोट कर सकते हैं। और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से जो भी डिफॉर्मेशंस डेवलप होंगे उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। तो volumetric stress is directly proportional to the volumetric strain within the elastic limit, and in that case when the proportionality removes a constant is introduced, this constant is known as bulk modulus. Okay, this constant is known as bulk modulus. तो यहाँ पर फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें समझी कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होते हैं, शेयर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, कम टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन क्या है, और बल्क हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स को देखा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। ओके, ये हमने अभी डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज Hooke's law? According to the Hooke's law, stress is equal to the modulus of elasticity into strain. What is stress? Stress is force upon area. And what is strain? Change in length upon initial length. Suppose there is a shaft whose initial length is L and a tensile force F is applied on the cross section of the shaft, and the area of this cross section is A, and modulus of elasticity for this material is E. जो ये इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं पर्टिकुलर मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो वी विल कैलकुलेट
change in length will be F into L by A into E. Okay, change in length will be force into initial length upon area into modulus of elasticity. ये चीज आपको समझ में है? ठीक है, अब इस फार्मूले को याद रखेंगे आगे जब हम अपने स्ट्रेट बार्स या किसी भी यूनिडायरेक्शन फोर्स में, जब हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल में स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे या डिफॉर्मेशंस के लिए एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर दिस फार्मूला इज यूज, वी विल यूज दिस फार्मूला इन दैट केसेस. ओके, तो इसको आप याद रखें, इस फार्मूले को आगे से हम यूज करेंगे अभी. अब मैं जरा थोड़ा सा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स. ओके, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Our next topic is longitudinal and lateral strain. Now, what is longitudinal and lateral strain? Let us consider a shaft of length L and diameter D. If a tensile force is applied on this shaft, and due to the tensile force, length of the shaft will increase by delta L. If we observe here, in that case, if the length of the rod is increased, then the diameter of the rod should be decreases. Okay, यहाँ पर अगर शाफ्ट की लेंथ इंक्रीज होगी तो जो डायमीटर है शाफ्ट की उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द शाफ्ट तो चेंज नहीं होने वाला. वॉल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा है और इनिशियल लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो लेंथ अभी इंक्रीज हो सकती है जब दूसरी डायमेंशन डिक्रीज करे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है. तो सिंपल लॉजिक है, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो डायमीटर डिक्रीज करेगा. अगर यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स होता, ओके, तो लेंथ अगर डिक्रीज करता तो उसी रिस्पेक्ट में डायमीटर इंक्रीज होती. तो जो भी स्ट्रेन्स, डिफॉर्मेशंस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस या लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशंस. फिर से मैं बता दूं, द डिफॉर्मेशंस parallel to the line of action of the force is known as longitudinal deformations, and the strain induced due to this longitudinal deformation is known as longitudinal strain. Here, if the force is applied parallel to the length of the, if the line of action of the force is parallel to the length of the shaft, in that case longitudinal strain will be change in length upon initial length. Okay, if the length is increased, in that case this strain will be a positive strain. Okay, now the deformation perpendicular to the line of action of the force are known as lateral deformations, and the strain induced due to this lateral deformation is known as lateral strain. So here the lateral strain is equal to the change in diameter upon initial diameter. Here the diameter of the shaft is decreases, so the strain is negative strain. Okay, if the longitudinal deformation is positive, या हम कह सकते हैं अगर longitudinal strain positive है
तो लैटरल स्ट्रेन ऑटोमेटिकली आपके निगेटिव होंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निगेटिव है यानी कि कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है और लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो लैटरल स्ट्रेन्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वहां पर लेंथ इंक्रीज होंगे परपेंडिकुलर डायमेंशंस पे। यहाँ हर एक पर्टिकुलर मटेरियल और बॉडी के लिए नोट कर लीजिए इस चीज को, हर एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन्स के जो रेशियोज होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली, ये फाउंड किया गया कि जो किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल की अगर हम बात करें तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के जो रेशियोज होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से, और इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। lateral strain, the ratio of lateral strain and longitudinal strain for a particular body, for a particular material is constant. Okay, if the longitudinal strain is negative, then lateral strain will be positive. If the longitudinal strain is positive, then lateral strain will be negative. Here this ratio is positive, we will take the ratio as positive. So for this we will multiply this ratio by minus sign for this, for making this ratio as positive. So what is Poisson's ratio? Poisson's ratio is the ratio between the lateral strain and longitudinal strain. ओके, और पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये जो रेशियो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स क्या है, लैटरल स्ट्रेन्स क्या है। ओके, जी अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार जरा देख लेते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसमें हमने समझा कि फोर्सेस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं, फिर उससे कितने तरह के स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है, स्ट्रेन्स क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स रेशियो को डिस्कस किया, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किया, अभी रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स नहीं किए हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है वो हमने देखा, ठीक। हुक्स लॉ डिस्कस किया, हुक्स लॉ क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे अभी जनरलाइज हुक्स लॉ आज, कि जनरलाइज हुक्स लॉ क्या है, व्हाट इज जनरलाइज हुक्स लॉ। अभी हमने जो भी डिस्कस किया वो यूनी डायरेक्शन फोर्सेस के लिए, कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन में फोर्स हो तो स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू पर यूनिट cross sectional area. Now stress is defined as the force intensity of or force per unit area. Here we use a symbol sigma to represent the stress. यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, दिखाया, consider a rectangular rod subjected to a axial pull P. Let us consider area, इसका एरिया जो है वो A हो अगर, then in that case इस सेक्शन के along जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनिट की, द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लेट से इसे पास्कल से भी डिनोट बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्लियर है ये?
ओके, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू द 10 टू द पावर 6 पास्कल। गीगा पास्कल इज जीपीए से डिनोट करते हैं, वो 10 टू द पावर 9 पास्कल्स। केपीए यानी कि किलो पास्कल, इट मीन्स 10 टू द पावर 3 पास्कल। ओके, समटाइम्स न्यूटन पर मीटर एमएम स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। और अगर आप इसको देखें, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू दी 1 पास्कल। ठीक है, अगर कहीं एरिया की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है तो स्ट्रेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। अगर इसे मैं मीटर स्क्वायर में चेंज करूं तो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए, न्यूटन अपॉन 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, यही होगा। इसे आप अगर सॉल्व करें तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 टू द पावर 6 को मेगा से अब हम दिखा सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को हम 1 मेगा पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं, 1 एमपीए। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू दी एमपीए, मेगा पास्कल। ओके, ये थोड़ा सा याद रखें इसको, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें, 2 टाइप्स की स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस और शीयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेसेस में 2 स्ट्रेसेस होते हैं हमारे पास, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और शीयर स्ट्रेस। दिस नेक्स्ट है हमारा शीयर स्ट्रेस। ठीक है, याद रखें, जब भी फोर्स की व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी देन द फोर्स इज टेंसाइल फोर्स, and when the direction of the force is along towards the body, this type of force is known as compressive force. Okay, now normal stress देखिए यहाँ डिनोट किया हुआ है, एरिया स्ट्रेस है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके लग रहे हैं सेक्शन पर। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। ये यूनी डायरेक्शन स्ट्रेस है। ओके, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक से ज़्यादा डायरेक्शन में लगते हैं तो बाई एक्सियल यानी कि एक्स और वाई में लग रहे हैं, दो एक्सिस में डायरेक्शन में। ट्राई एक्सियल यानी कि एक 3 डायरेक्शंस में आपके स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो अभी जनरलाइज हुक्स लॉ हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम के लिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में। Compressive stress, when the line of action of the force is perpendicular to the plane and direction of the force is towards the body, is the stress is known as compressive stress. Now the shear stress, let us consider, अब इसमें आपको एक एरिया एक बॉडी मानी पड़ेगी। When the line of action of the force is parallel to the body, so this stress is known as shear stress. कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस के बारे में डिस्कस और कर लेते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस? द एग्जिस्टेंस ऑफ shear स्ट्रेस ऑन एनी टू साइड्स ऑफ एलिमेंट्स induces complementary shear stresses on the other two sides of the element to maintain equilibrium. equilibrium maintain करने के लिए अगर किसी अपोजिट दो प्लेन्स पर अगर आपके shear stresses हैं तो रिमेनिंग जो दो आपके साइड्स बचे हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट्री shear stresses होते हैं फॉर मेंटेनिंग दी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ओके, सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अगर बी सी प्लेन पर टाउ shear स्ट्रेस है तो ए बी पर ऑटोमेटिक होगा, ए बी और सी डी पर। ओके, अगर shear स्ट्रेस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, व्हाट इज मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, बॉडी है, उसके दो पैरेलल प्लेन्स पर जो shear स्ट्रेस है। अब यहाँ पर जो shear स्ट्रेस की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। दिस shear स्ट्रेस विल टेक एज क्लॉकवाइज shear स्ट्रेस इज पॉजिटिव shear स्ट्रेस। अगर shear स्ट्रेस की डायरेक्शन अपोजिट हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, दिस shear स्ट्रेस इज टेकन एज नेगेटिव shear स्ट्रेस। जब कॉम्प्लीमेंट्री shear स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर क्लॉकवाइज shear स्ट्रेस होगा दो प्लेन्स पर
तो अदर टू प्लेन्स पर एंटी क्लॉकवाइज शेयर स्ट्रेस होगा। ये दोनों मेंटेन हो जाएंगे, ये दोनों, ये सब सारे स्ट्रेस जो मिलेंगे ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस को प्रोड्यूस कर देंगे आपके। ओके, strain, when a single force or a system of force acts on a body, it undergoes some deformation. That this deformation per unit length is known as strain. So elongation upon original length is known as strain. Elasticity, the property of material by virtue of which it returns to its original shape and size upon removal of load is known as elasticity. एक्चुअली हुक्स लॉ के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस पर यूनिट, नहीं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो अभी मैंने इलास्टिसिटी आपको बताई। इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल अपनी इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अपॉन रिमूवल ऑफ लोड इज नोन एज इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज हुक्स लॉ। इट स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ओके, ओके, सॉरी, डिस्कस करते हैं जनरलाइज हुक्स लॉ। व्हाट इज जनरलाइज हुक्स लॉ? ओके, देखिए, यूनिडायरेक्शन स्ट्रेस से, यूनिडायरेक्शन फोर्स से स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशंस हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर अब हमने देखा अगर एक डायरेक्शन में भी अगर फोर्स है तो उससे भी दो डायरेक्शंस में डिफॉर्मेशंस डेवलप हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन में अगर फोर्सेस हो किसी बॉडी पर तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अभी हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर ए बॉडी having three mutually perpendicular stresses let us consider a body having three mutually perpendicular stresses sigma x, sigma y and sigma z. Clear? Sigma x, sigma y and sigma z in x, y and z directions. Okay. Now let elastic constant for the material is E, या कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी modulus of elasticity is E and Poisson's ratio of the material is mu. Okay, in that case stress, strain in x, y and z direction
due to the stress sigma x. First of all, here we calculating the strain in x, y and z direction due to the stress sigma x. Now, first strain in x direction will be, किससे डिनोट करेंगे, ई एक्स एक्स. व्हाट इज ई एक्स एक्स? देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी मैंने लिखा अगर सिग्मा एक्स एक्स या ई एक्स एक्स या सिग्मा एक्स वाई, तो फर्स्ट सफिक्स जो उसमें है ये उसके प्लेन को डिनोट करता है, किस प्लेन पर है ये, और सेकंड सफिक्स जो है वो एक्सिस को डिनोट करता है. तो सिग्मा एक्स एक्स मीन्स स्ट्रेस ऑन एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन. अगर यहाँ मैं लिखूँ सिग्मा एक्स वाई, स्ट्रेस ऑन एक्स प्लेन इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा एक्स वाई होगा. क्लियर? तो एक्स प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं स्ट्रेन, तो कैसी स्ट्रेन होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी. और फार्मूला क्या होना चाहिए इसका, सिग्मा एक्स अपॉन ई. क्यों? अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. ये फार्मूला हमने यूज किया, तो स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और ये किस तरह का स्ट्रेन है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. देखिए अब अदर टू जो स्ट्रेन्स हैं आपकी, अगर मैं अब यहाँ फाइंड आउट करें हम स्ट्रेन इन y direction due to the stress sigma x, then exy, x प्लेन पर स्ट्रेन फाइंड आउट करना है y डायरेक्शन में, exy कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए क्या है, वी नो दैट Poisson's ratio mu will be equal to the lateral strain upon longitudinal strain. So lateral strain will be mu into longitudinal strain, यही होना चाहिए, mu into longitudinal strain. इसी फार्मूले को यूज करेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा mu into longitudinal strain. एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है हमारी, सिग्मा एक्स अपॉन ई. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ई एक्स एक्स, इट मीन्स ई एक्स वाई will be mu into sigma x upon e. Clear? Okay. और जैसा कि हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो लेटरल स्ट्रेन निगेटिव होगी. तो जो ये लेटरल स्ट्रेन है आपकी ये माइनस में होगा. ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन होगी आपकी. नाउ स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, ई एक्स जेड, ये हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो सिग्मा एक्स अपॉन ई है. सो ये हो जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई इंटू माइनस में, लेटरल स्ट्रेन इक्वल होगा. नाउ स्ट्रेन in x, y and z direction
due to stress sigma y. First of all, longitudinal strain determine करते हैं, strain in y direction, because सबसे पहले y एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में हम स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं. क्या होगा? ई वाई वाई. क्या होगी वैल्यू? सिग्मा वाई अपॉन ई, बिकॉज ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. सिमिलरली स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बी ए लॉन्गिट्यूडनल lateral strain, so it will be equal to EYX. EYX will be equal to minus mu into longitudinal strain, which is sigma y upon E. Now strain in Z direction, EYZ will be equal to the minus mu sigma Z upon E. Similarly, strain in X, Y and Z direction due to stress sigma Z, strain in, so first of all we have calculate the longitudinal strain. So the longitudinal strain will be in Z direction. So strain in Z direction will be sigma Z upon E. Similarly, strain in X direction, we can calculate the strain in Z direction. EZX will be equal to the minus mu sigma Z upon E, and final strain in Y direction EZY will be minus mu sigma Z upon E. Okay. Now calculating total strain in X direction. Total strain in X direction. तो सम कर देंगे हम जितनी भी स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ई एक्स एक्स, ई वाई एक्स और ई जेड एक्स. स्ट्रेन ड्यू टू द स्ट्रेस x in the direction of x, strain due to the stress y in the direction of x, strain due to the stress z in the direction of x. Now this will be the total strain Ex will be sigma x upon E plus minus mu sigma y upon E plus minus mu sigma z upon E. Now the total strain in x direction will be sigma x upon E minus mu by E sigma y plus sigma z. Okay. Similarly, total strain in y direction will be Ey will be strain due to the stress y in y direction, strain due to the stress x in y direction, strain due to the sigma z in y direction. So here total strain will be Ey will be sigma y upon E minus mu by E sigma x plus sigma z. Clear? Okay.
and the final total strain in z direction will be Ez will be strain due to the sigma z in z direction, strain due to the sigma x in z direction, strain due to the sigma y in z direction. So the total strain will be sigma z upon E minus mu upon E sigma x plus sigma y. Okay. Now the final equations for the principal strains Ex strain in x direction is sigma x upon E minus mu by E sigma y plus sigma z. Total strain in y direction will be sigma y by E minus mu by E sigma x plus sigma z, and total strain in z direction will be sigma z upon E minus mu by E sigma x plus sigma y. These are the principal strains, three principal strains in x, y and z direction due to the normal stresses. Now there are three more equations for the shear strains due to the shear stresses. Phi x will be tau x upon g, phi y will be tau y upon g, and phi z will be equal to the tau z upon g. These six equations are known as generalized Hooke's law equations for a three-dimensional body having uh, stresses more than one direction, more than one axis. Okay, in or we can say that stresses in x, y, and z directions. Okay, I hope all the topics are cleared. If you have any problem, you can ask me through email. Okay. Okay. Thank you so much.